support Jallikattu. We support Jallikattu. We support Jallikattu. Save Jallikattu. Save Jallikattu. We support Jallikattu. We support Jallikattu. We support Jallikattu. We support Jallikattu. We want Jallikattu. We want Jallikattu. We support Jallikattu. We support Jallikattu. We want Jallikattu. We want Jallikattu. We support Jallikattu. We support Jallikattu. ஹிந்தியில் எல்லாருக்கும் ஜல்லிக்கட்டை பற்றி எடுத்து சொல்ல வந்திருக்கிறார். ஜல்லிக்கட்டின் அருமை, ஜல்லிக்கட்டின் தமிழர்களின் பாரம்பரியம் எல்லாத்தையும் ஹிந்தியில் நமக்கு பேசி எடுத்து சொல்ல வந்திருக்கிறார். சாவுல் ஹமீத் அருமை. வணக்கம், நமஸ்தே भाइयों बहनों। जल्लीकट्टू ஏறு தழுவுதல் तमिलनाडु में जनवरी का दूसरा हफ्ता में ताई पोंगल का दूसरा दिन यह त्यौहार हज़ारों सालों से मनाया जाता है। ताई पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। यह त्यौहार में बैल का एम्ब्रेसिंग स्पोर्ट कंडक्ट करते हैं। इस खेल के दिन में मैदान में बैल को छोड़ते हैं और खिलाड़ियों एक से एक उस बैल के ऊपर 30 से 50 मीटर तक जाना पड़ता है। तो इसमें जो जीतता है उसको इनाम मिलती है। ये त्यौहार में जो बैल स्ट्रॉन्ग होती है उसको मंदिर का बैल बनाया जाता है और इस बैल को ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे नेटिव ब्रीड्स बचाते हैं। इन बैलों को किसान अपने बाल बच्चे जैसे देखभाल करते हैं। सालों साल से हमारा देश में 1 से 30 टाइप के नेटिव कैटल ब्रीड्स था, पर अभी सेंसस के मुताबिक सिर्फ 37 नेटिव ब्रीड्स बचा है। तमिलनाडु में 10 साल पहले 900,000 यानी 9 लाख से ज़्यादा बैल थे, पर अभी उससे 10% का पॉपुलेशन जो 90,000 के नीचे ही है। नेटिव ब्रीड्स के एक विशेष एडवांटेज है कि ये जो गायों का दूध है ये A2 टाइप का होता है, बल्कि ये क्रॉस ब्रीड में जो A2 टाइप का दूध नहीं मिलेगा। A2 टाइप का दूध का ये एडवांटेज है कि इसमें ज़्यादा प्रोटीन है, इम्यूनिटी है और डायबिटीज़ को रोकती है। ये बेनिफिट्स A1 दूध में नहीं है। अगर नेटिव ब्रीड्स एक्सटिंक्ट हो जाता है तो क्रॉस ब्रीड्स शुरू होगा और इसमें जो A1 टाइप का दूध मिलेगा, इस टाइप का दूध में कमी बहुत है। जल्लीकट्टू एक ब्रीडिंग साइंस है। इसमें एनिमल क्रूएल्टी नहीं है। अगर लोग बैल के ऊपर मैल सवार किए हैं और बैल को खेतीबाड़ी में एनिमल क्रूएल्टी हो जाएगा। जल्लीकट्टू एक एंटरटेनमेंट स्पोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक रूरल इकोसिस्टम और रोजी रोटी में जुड़ा है। जल्लीकट्टू एक पारंपरिक हिस्सा है और किसानों बैल को पालना उसका अधिकार है और बैल को गौरव से पालते हैं। हमारा तमिलवासियों, भारतवासियों का ये इच्छा है कि अभी जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है जल्लीकट्टू मनाने के लिए, उसको परमानेंट लॉ बनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया शाहुल हमीद, आप जल्लीकट्टू मालूम नहीं आदमी को भी बहुत अच्छा से मालूम करने के लिए रख दिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। To share his knowledge with us about Jallikattu. Thank you. Thank you everyone for coming over. Firstly, I would like to clear a few things.
here for the humane treatment of humans as well as animals. Firstly, I would like to make that clear. And apart from that, I am also for preserving culture and heritage, and also preserving the indigenous species, be it cattle or any other breed. Now, the point of contention of the ban on Jallikattu was the cruelty to animals. Now, every culture has a dark side, and there are always some fringe elements which who might create problems, but that can be used as a cause for banning the entire tradition or a culture. So that's something that needs to be noted. The next one is the insensitivity shown towards Tamil culture is something which has become very obvious over the process. Then the other side of the story is when we talk about culture or any tradition, it's something that evolves over a period of time depending on the geographical location and the kind of practices followed there. So now, if you expect the whole world to follow the same traditions and practices and culture, it might not be feasible. For example, vegan diet is something which cannot be adopted everywhere. Agriculture by itself is just a few thousand years old, but before that, people have always been eating non-vegetarian food. And the next one is about the Jallikattu itself. It's something like what we have in the Western world, where we have dog shows. It's something like that. It's more like showcasing the bulls. So it's shown as a sport. So it should not be seen as something that is followed to harm the animals. And regarding the protest in Marina, it is something which we all need to be proud of. We have always seen ourselves back home divided by caste, religion and politics. And for the first time, we have all come together, barring all these caste, religion and politics, and taken a common platform to address ourselves unitedly. So it's something for the first time no one has ever seen before, and also there is no leader, most of all, because it's something which everyone felt the need to stand up for ourselves and come together. So we could see that the millions of people who have gathered on Marina Beach have gathered there on their own without a leader, which is an example of how a peaceful protest should be. And I think those people who have to hear have started hearing what we are saying. And moreover, this unrest and this uprise should be seen more as a symptom, as something is an outcome of a suppression or outcome of something which has been over a period of time. Now, for the future, while there could be some regulation, it can't be said that it has to be enforced on its own. It is something that needs to be regulated. It's a process and that needs some time to change. So we need to develop some tools to monitor how the sport is conducted, and maybe that's the way forward. And another thing, most importantly, is the prime point of contention from the point of arguing for Jallikattu is the diminishing indigenous breeds. Now, when we talk about culture, back home we give cow's milk as a substitute to mother's milk, and that's culture. It might not be followed elsewhere in the world, but it's something which is a common practice back home. So it is something which can't be changed, and if we don't make provision for breeding the indigenous species, we might be out of indigenous cattle totally. And beyond Jallikattu being used as the only platform to grow or develop the indigenous breeds, organizations which are keen to ban such sport should really come up with suggestions how to
protect and develop the indigenous breeds, indigenous cattle all over the world. And probably because this being a big issue back home, this could be a pilot project they could take up and try to grow the cattle. We fully support the movement and the protest back home, and we hope a resolution is achieved soonest. And we hope to see the Jallikattu being conducted and a permanent solution to Jallikattu is soon out there. Okay, thanks very much. Thank you, Mr. Victor, for sharing your knowledge with us. And again, to the crowd, I thank every single one of you here for coming down on this boring, rainy day. அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. எதுக்கு இருக்கோம்? What do we want? We want We want ஜல்லிக்கட்டு நிரந்தர தீர்மானம் வேண்டும். We want